नमस्ते, once again welcome to NCERT's live phone-in program. मैथ्स के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है और आप इस वक्त हमें देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 8 पर। 8वीं कक्षा के सभी बच्चे हमारे साथ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स इस सेशन में पढ़ने वाले हैं। ये है पार्ट 2 और पार्ट 1 में भी कुछ चीजें समझाई गई थी, तो शुरुआत इसी से करेंगे कि पार्ट 1 में क्या समझाया गया था। एक ब्रीफ डिस्कशन होगा और फिर पार्ट 2 में हमारी एक्सपर्ट आप सभी से आज क्या शेयर करेंगी, क्या समझाएंगी, हम उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी अपने क्वेश्चंस रेडी रखिए और हमें जल्दी से भेज दीजिए ciet.kishoremanch@gmail.com पर। और चाहे तो हमारे YouTube चैनल के थ्रू भी आप अपने क्वेश्चंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। NCERT ऑफिशियल के लाइव कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखिए और जल्दी से सेंड कर दीजिए। और आइए मिलते हैं हमारी एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं मिस अंजलि गुप्ते। वेलकम मैम। थैंक यू तन्वी, नाइस टू बी बैक अगेन। मैम है शमतलाया उदयपुर से और आइए और टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर बातचीत शुरू करते हैं। मैम पार्ट 1 में भी कुछ पोर्शन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का समझाया गया था, तो ब्रीफली बहुत ही थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जल्दी से बता दीजिए और फिर आज आप पार्ट 2 में क्या डिस्कस करने वाली हैं वो भी प्लीज बताइएगा। बिल्कुल, तो तन्वी फर्स्ट पार्ट में शायद उनके साथ स्क्वायर्स हुआ था, मतलब व्हाट आर स्क्वायर्स, ठीक है। तो स्क्वायर्स मतलब देयर आर सो मेनी स्क्वायर्स, राइट, इवन शेप्स आर स्क्वायर्स, राइट, बट दिस स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। सो वी आर टॉकिंग ऑफ से 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, है ना। तो वो जो एक्सपोनेंट होता है ऊपर लिखा जाता है नंबर के, उसको हम स्क्वायर बोलते हैं और वो इंडिकेट करता है कि उसी नंबर को 2 बार हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। वी आर टेकिंग दैट नंबर ट्वाइस, सो इट इज, इफ यू हैव 2 into 2 it will be 2 squared. So that was what was discussed in the first part. Now I am going to take the next part, which is going to be square roots. So how to go to the root of it. So that's what we are going to do. Okay, so shall we begin, ma'am? Yes, absolutely. Okay. I am ready to go. All right. So I'll start with some examples of where you will be able to use, where you will be using in future, because this is not immediate maybe, but in future, supposing you become carpenters, engineers, architects, so then that's where you will be using all this knowledge. So obviously you can't suddenly be learning it when you start becoming engineers or architects. So we have to go slowly, right? So that's why we start introducing it in this stage, and then slowly you take it ahead and then you go to complicated versions. Okay, so now we will see what are inverse operations. Okay, so Tanvi, this plus and minus is an inverse operations, which means that they nullify each other. Okay, so plus will negate the minus. So if I have a 6 plus and if I subtract another 6 from the same number, then I get the whatever the original number was, right? So that's an inverse operation. Similarly, multiplication and division are inverse operations, where if you multiply by a number and you divide by the same number, they will cancel each other, right? They will be, you will divide say 7 upon 7 into some number, so it will be 1. So you are basically multiplying by 1. Similarly, we have 2 inverse operations, which are squares and square roots. So just like plus and minus, divide and multiply, squares and square roots are inverse operations. And I am going to take the second portion, which is square roots. But of course, we cannot do away with squares, right? I mean, unless we have squares, how can we find out the square root? So how do they work? Okay, now in the case of squares and square roots, how will they work? So if I say I'm taking a square root of 3 squared, see, then what I'm meaning is it is 3 raised to 2 and whole raised to x. Okay, so now this answer I should get as 3. Okay, similarly, if I have the under root of 4 and I square it, then it becomes 4 raised to x raised to 2.
and that should be equal to 4. Now we want to find out what this x is, and this x is going to be what the root sign is going to mean. So we want to know what does the root sign mean. Okay, so now you see where I've made these two equations, obviously 3 raised to 2 raised to x means 3 raised to 2 times x, okay, or 4 raised to x raised to 2 means x times 2, 4 raised to x times 2. Now this should be 1, otherwise we won't get 3 or 4, right? So what can x be? Obviously x has to be half, because if it is half, only then it will cancel with the 2 which is there, that is the square, and so we will get 1. So it will become 4 raised to 1 or 3 raised to 1. See? So this is how you find out what the root sign stands for. Okay? So whenever I mean a root sign, I actually mean the exponent, which is the exponent raised to 2, then 2 becomes the 3 raised to 2 is an exponent, 2 is the degree. Okay? So for a root sign, we have 3 raised to half. Is that clear? Right. Can I go on? Okay. Now we will talk about perfect squares, which they must have done. Perfect squares means when you are multiplying a number by the same number, and whatever answer you get, that gives you a perfect square. So in this square, as you can see, I've written 1 to 10 and 1 to 10. And inside this table, you have the multiplication of these two. Okay? So each block is 2 into 1. Can you see? 1 into 1. See, I'll show you the diagonal. Can you see the diagonal? Yes, now. So that diagonal gives you the square numbers only. So 1 times 1 is 1, 2 into 2 is 4, 3 into 3 is 9, 4 into 4. Now these are all perfect squares. Why they are called perfect squares? Because when you take the root, you get a whole number. Okay, so if I take the root of 1 over here, then I get 1, which is this number over here. If I take the root of 4, it is 2. 9, it is 3. 16, it is 4. 25, it is 5. Clear? So this diagonal gives you perfect squares, and these numbers over here are giving you the square root. Now remember that the square root we are taking over here is a positive one. Okay, we are not considering negative. Negative numbers, square roots we'll consider later when you grow up a little bit. In 8th class, we are taking only the positive roots. So because somebody might question me because they know integers, so minus 1 into minus 1 will also give you a 1, right? So actually, when I'm considering a square 1, I can get answer as plus 1 or minus 1 as a root. Similarly, if I take 4, I can get plus 2 or minus 2 as a root. However, we are going to consider only the positive numbers. Okay. Now, where is it used very extensively? So, it is used very extensively in Pythagorean triplets. Because in Pythagorean triplets, we need to find out these numbers. Okay, so supposing you're given two sides, then we need to find out the third side. ऐसे questions आते हैं ना, you get such questions in your text. So in that case, we need to find out square roots. How? I will just show you. This is just to show you the Pythagoras theorem, which is a revision. So if you see over here, I have taken a 4 by 4. Over here, it is a 3 by 3. And then the answer, which is, I mean the hypotenuse, it has got a square, which is the sum of these two. Can you see them arranged over here? Unit squares. So you have this pink one fitting right here, and you have the yellow ones fitting right here. Right? So C square becomes equal to A square plus B square. This is a very famous Byju's ad also, you can see, right? So this is something that is very, very famous. It is a Pythagorean theorem. But we will see how it works. So we know that C square is equal to A square plus B square. So C, which is the hypotenuse, we can find out by finding the root of the sum of these two numbers.
So supposing you have 3 and 4 as two sides of a right angle triangle, then the hypotenuse will be C equals to under root of 3 square plus 4 square. See, because A is 3 and B is 4, which is 9 plus 16, and that is equal to under root of 25. So this sign, it's known as under root. And when it is under root without any number written, it is always square root. So it is a root with it is a square root. But for a cube root or a fourth root, they will write over here the number. Okay, so under root sign is there, and they will write over here 3 or 4, which means it's the third root or the fourth root. वो भी निकलता है. So that also we can find out. And there are cases where they need it. Now look over here, this is a perfect Pythagorean triplet, 3, 4, 5. ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बहुत मजेदार होते हैं तन्वी, पता है, बहुत मजा आता है देखने में। अब स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टर्स से, ठीक है। सो लेट अस सी द फर्स्ट मेथड, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64 सपोजिंग आई से। Now 64 तो we know because it is a perfect square, and many of us may know कि 8 times 8 is 64, right? Right. So we can write, this is the way we write, under root of 64 equals to under root of, now we have taken the factors of 64, and because we know that 8 times 8, so we are writing 8 squared. But if you don't know, then you have to find out this. This is prime factors. Right? Now supposing you are asked to find out under root of 32. Now 32, one doesn't know whether it is obviously it is not a perfect square, because we know all the perfect squares, right? We know 4 4s are 16, 5 5s are 25, 6 6 are 36. So you can see it's not a perfect square. So what we can do is, by this method we can find out, simplify it. So this is one of the questions which they get in their text. So they are asked to simplify the under root of square 32. So then you do it by prime factors. 2 times 16, 16 is 2 times 8, 8 is 2 times 4, then 4 is 2 times 2. Then we make groups. See, we make pairs. So pairs are the squares, perfect squares. Now बच कौन सा गया है? 2. तो 2 अकेला बचा है, ऑब्वियसली दिख रहा है कि अगर मेरे को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तो मुझे 2 से और एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि व्हाट डू आई मल्टीप्लाई इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इफ यू गेट सच अ क्वेश्चन, देन यू डू इट बाय प्राइम फैक्टर्स, मेक द ग्रुप्स दैट यू कैन, दैट इज द पेयर्स दैट यू कैन, लाइक आई हैव डन, एंड जो बच जाता है ना उसको मल्टीप्लाई करना होगा ऑब्वियसली। क्लियर है ना? तो इसको लिखने का ये तरीका है, देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये इस तरह से लिखा जाता है। तो इट्स अंडर रूट ऑफ 2, अब 2 स्क्वायर्ड है ना, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, 2 स्क्वायर्ड यहाँ लिख लिया, फिर मैंने ये रूट साइन अलग भी कर ली, ये भी आप कर सकते हो। अंडर रूट ऑफ x टाइम्स y इज इक्वल टू अंडर रूट x इंटू अंडर रूट y, इसलिए रूट साइन हर एक को भी लग सकती है जो भी फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको भी लगाया, इसको भी लगाया, इसको भी लगाया। अब ये तो हमें मालूम है ना कि इसको तो इसका आंसर 2 आता है, पहले ही देखा था हमने, इफ यू रिमेम्बर इनवर्स ऑपरेशन में, है ना। एंड अगेन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर वो आएगा, और ये जो बच जाता है ये अलग से हम लिख लेते हैं। तो आंसर सिंप्लीफाई करके हमारा हुआ है 4 टाइम्स रूट 2। ओके, नाउ यू माइट आस्क कि भाई ये अंडर रूट 2 भी तो कोई मुश्किल ही है, नहीं तन्वी? क्या सोचोगे, अंडर रूट 2 मतलब कैसे दिखेगा हमें, है ना? तो लेट अस सी हाउ वी कैन सिंप्लीफाई दैट फर्दर। Okay. Now one thing which is very essential to anything you do, estimation is very 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 important। तन्वी, हमेशा एस्टिमेट करते हो ना तो सही रहता है। तो इसलिए जब भी आपके पास कोई ऐसा सवाल आता भी है ना, एक बार तो एस्टिमेट करके देखिए जो नंबर आप जानते हैं वो। तो जैसे अगर मेरे को ऐसे दिए हैं नंबर्स, तो इसमें से अगर मेरे को किसी ने पूछा कि ये परफेक्ट स्क्वायर कौन से वाले हैं, है क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? तो इस केस में हम ये करते हैं कि ये जो यूनिट
होता है ना पोजीशन, ये आप देखिए कि ये किसी ना किसी परफेक्ट स्क्वायर में आना चाहिए। अगर ये वंस वाली जगह किसी परफेक्ट स्क्वायर में आ रहा है ना, तब तो ये संभावना है कि ये हो सकता है। ठीक है, तो कैसे? तो 153 में आप देखोगे 3 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता है। तो मैं परफेक्ट स्क्वायर वापस बोलती हूँ आपके लिए, 1 4 9 16 25 then 36 then 7 7 the 49 8 8 the 64, so you can see 3 does not come, है ना? 3 नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसको आप रिजेक्ट कर सकते हो, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। 257 भी नहीं है ना? क्या सोचती हो? 7 नहीं आ रहा है ना, मैंने अभी जो बताया आपको। राइट मैम, 7 नहीं आ रहा है। 4 9 कोई नहीं आ रहा है। 441 हो सकता है क्या? हाँ मैम, 9 9s are 81। वेरी गुड, 9 9s are 81, 1 1s are 1, so Right. possibility is there. And again 0 0, तो 0 आ रहा है तो हो सकता है क्या? हो सकता है। 10 10s आ रहा है। Right, वेरी 10 गुड। तो ये है, ये एक तरीका है हमें पहचानने का, अगर नंबर दिया हुआ है तो पहचानने के लिए कि ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, इसको आप जानने के लिए ये एक तरीका है। ठीक है, ओके। नाउ अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए, तो एक तो मैंने आपसे डिस्कस किया। ठीक है, अब जैसे इधर 500 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एज 500 इज फैक्टर्स अगर आप करते हो तो 5 times 100 होता है ना? फैक्टर 5 इज डेफिनेटली 100 तो है 10 का, है ना? लेकिन 5 तो नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो आइदर यू कैन मल्टीप्लाई बाय 5 और यू कैन डिवाइड बाय 5। समझ में आएगा ना? तो परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई नंबर दिया है उसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाए, तो इसके लिए ये तरीका है। अब ये तो दिस इज जस्ट अ गेम, यू नो, एक्चुअली इट्स अ गेम एंड यू शुड जस्ट टेक इट एज सच ऑल्सो, कि मैं ये फैक्टर निकाल रहा हूँ, अभी मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, किस तरह से बना सकता, अब कैसे यूज होता है वो मैं आपको बाद में आगे जाके बता रही हूँ। ठीक है, ओके। अब दूसरा मेथड होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये भी एक बहुत इट्स अ मैकेनिकल मेथड एंड मे बी यू माइट गेट थोड़ा सा बॉग डाउन बाय दिस, बट इफ यू प्रैक्टिस आई प्रॉमिस यू दैट इट्स नॉट डिफिकल्ट। Maths is So now all we- about practice at the end, right? Exactly, practice makes you perfect. Yes. तो ये है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 529। नाउ अगेन 9 आप सोचते हो कि परफेक्ट स्क्वायर में आ सकता है, राइट? बिकॉज 7 7 का 49 होता है, Right. परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 3 3 का भी 9 होता है, सही है? सो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर होने के चांसेस है जी। अब इसके बीच में आएगा, ये थोड़ा अगर सोचना है तो जो हमें मालूम होते हैं ना नंबर्स, उन्हीं को आप पता करो। तो जैसे मेरे को 20 का स्क्वायर मालूम है 400 और मुझे 25 का 25 का मालूम है 625। तो अब मैं सोच रही हूँ, देख रही हूँ कि ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में है, सही है? तो मेरा जो स्क्वायर रूट आना चाहिए वो 20 और 25 के बीच में आना चाहिए। समझ में आया ना? तो अब हम कैसे करेंगे? तो हम जोड़ियां बनाते हैं। ठीक है, अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड का समझना है आपको। लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये जो होता है, दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ योर होल नंबर, है ना? दिस पॉइंट जहां पे आपका वंस पोजीशन होता है, वहां से आप दो दो की पेयर्स बनाते हो। ठीक है, तो ऐसे मैंने ये लाल डंडी लगाई है ना ऊपर, ऐसे हम पेयर बनाए। अब जहां पे एक ही नंबर है वहां पे आगे मैंने 0 लगा दिया। ठीक है मैम, आपने आगे 0 लगाया है, क्या ये 0 हाँ। सिर्फ आगे ही लगता है? अगर हम पीछे 0 लगा देंगे तो नंबर चेंज हो जाएगा ना? हाँ भाई, बहुत बड़ी भारी मिस्टेक हो जाएगी ना, इसलिए हमें वो नहीं करना है। तो इसलिए क्योंकि हमें ये समझ लेना है कि यहाँ पे नंबर एंड होता है 529 पे, तो 9 के आगे और कोई डिजिट हम ऐड नहीं कर सकते। इसलिए हम उस तरफ जाते हैं, टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, Okay. so now we have to see what square can I subtract from 5. Now let's see कैसे कर सकते हैं। It is 2 into 2 4, right? Right. तो अब ये डिवीजन मेथड, देखो वो बाल खुजरा रहा है बच्चा भी कि क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं।
तो ये तरीका होता है, ठीक है। ये आपने दो पेयर बना लिए, अब 2 टाइम्स 2 लिखोगे और यहाँ 4 आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट है। तो फर्स्ट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट अ परफेक्ट स्क्वायर, ओके, एंड देन over here you add this number. Now while you are adding this number, possibly I think this thing you will understand when you do chapter 14, which is your factorization. तो algebra का इसमें रिलेशन होता है। इसमें ये होता है कि हम इस पूरे नंबर को ऐसे देख रहे हैं जैसे दो नंबर को जोड़ के एक स्क्वायर बनाया हो, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये सुना होगा आपने कभी, तो है ना। तो a प्लस बी होल स्क्वायर से का यूज करके हम इस वाले लॉन्ग डिवीजन मेथड को करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लगता है कि जब आप वो समझ जाओगे पहले, उसके बाद समझेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे 2 को प्लस करना है और यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 5 माइनस 4 करके 1, और फिर बाकी बचा जो अपना पेयर था ना, जो अपने लाल लाइन बनाई थी, उसको नीचे उतार लेते 129। तो इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक डिवीजन, नॉर्मल डिवीजन जो हम करते हैं वैसा नहीं होता है, हल्का सा फर्क होता है। अब ये 43 जो है ना, यहाँ पे ये 3 मैंने ट्रायल से किया है, ठीक है, आई एम ट्राइंग आउट। तो ये 3 पहले लिखा हुआ नहीं होता है, आपने तो 2 + 2 4 लिखा। 3 को हम ट्राई करते हैं, तो मैं 3 × 3 मतलब 43 × 3 करके देखूंगी कि ये इसमें जाएगा क्या, नहीं तो मैं 9 × 9 लिखूंगी। तो ये ध्यान रहे कि यहाँ पे तो हमको दोनों नंबर सेम ही लिखने हैं। 3 लिखते हैं तो यहाँ 3 लिखेंगे, 9 लिखते हैं तो यहाँ भी 9 लिखेंगे, ओके, है ना, और 7 लिखेंगे तो यहाँ 7। तो 9 नहीं 7, सॉरी, बिकॉज 9 एंडिंग है, इसलिए मैंने बोला था ना, या तो इट इज 3 एंडिंग द स्क्वायर रूट, और इट इज 7 एंडिंग, बिकॉज 3 × 3 is 9 and 7 × 7 is 49, ओके। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब मैं ये इंटू करके यहाँ लिख लेती हूँ तो 129 आ रहा है, राइट। सो देन माई स्क्वायर रूट बिकम्स 23। Should I repeat it once more? No ma'am, it is very much clear. But अगर आप ऐसा एक प्रॉब्लम बच्चों के लिए दे देंगे ताकि घर जाने के बाद, ये सेशन खत्म होने के बाद, they can solve it on their own, and if they feel like there's some problem, there's some doubt, then they'll share and come back to us. Oh, okay. So because we don't I have give you much time left, and we have to wrap up this session here. Oh, so then shall I give the next question, because I have written down that question? Yes, ma'am. So please give it to us. This is finding a square root of 7.29. Now remember over here decimal point, so you make a pair on the left side and then on the right side. Procedure is the same, okay? Okay. No change in procedure. So let them try this question, 7.29, and see if they can get it right. Because it is really it's a difficult question, and so I don't have time, but can I then say where it is applied? Just one. So supposing 1,000 plants that a gardener wants to plant in an orchard, that number of rows and number of columns are same. So and then they are asking how much would be left over. So when you are asking such a question, this is where the application of the square roots, maybe prime factors or division method. So how many will be left over? Division method से करोगे या इससे, ठीक है? Mostly I think division method से when they ask you ना कितना add या subtract करना है, वहाँ पे ये होता है. And when they ask you what is to be multiplied, then you use the prime factorization. So do this 2 sums also, if you can note it down, and you can do it for your homework. Perfect. Thank you so much, ma'am. I'm sure they'll be more than interested in doing this homework and in solving these questions. Yeah. Thank you, ma'am. And this is the hint. Okay, secret lies in the remainder. Sure. Thank you for all the students.
Thank you to all the students, viewers as well. You saw maths पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, एंड आपको भी आया होगा. और ये जो क्वेश्चंस हैं जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं, और आप इनके आंसर्स और जो फॉर्मूला आपने यूज़ किया है, जो प्रोसेस यूज़ किया है, वो भी आप हमारे साथ शेयर करते हैं. ciet.kishoremanch@gmail.com पे जल्दी से भेज दीजिए. वी ऑलवेज वेट फॉर योर क्वेश्चंस, फॉर योर आंसर्स, फॉर you sharing us anything and everything regarding any topic, any subject. Thank you once again. Stay happy, stay healthy, and yes, don't go anywhere. हम थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं एक स्पेशल प्रोग्राम लेके, webinar on ICT tools. So stay with us and keep on watching NCERT's online